Hello everyone, myself Adarsh Pandey, and this is the application of AutoCAD. In this application, this is the workspace area where we perform the different designs of mechanical parts. And this is the 2D design space area. Now we will choose the 3D space design area from here, and we will choose 3D modeling. After that, we will choose SC isometric from here. and after and after shaded area. ओके, हम यहाँ पे एक नट का डिजाइन करने जा रहे हैं। तो नट के डिजाइन के लिए पहले तो हमें पॉलीगन चूज करना होगा। तो हम पॉलीगन कमांड को चूज करते हैं। अब यहाँ पे इंटर करना है हमको नंबर ऑफ साइड्स। सो नंबर ऑफ साइड्स वी विल इंटर 6। इंटर प्रेस हम कहीं पे भी प्रेस कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का। तो इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, तो हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का ऑप्शन चूज करते हैं। चूज करने के बाद हम रेडियस 200 डाल देते हैं। 200 चूज करने के बाद नाउ वी विल चूज द रेडियस and we will place the cursor on radius of polygon and enter the value of the circle 200 and press enter. After we will again choose enter radius command from circle command and we will place the cursor in circular radius and we will enter the value 100. This value is the radius of the circle. तो ये जो वैल्यू हमने इंटर किया है ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है। उसके बाद फिर हम लाइन कमांड को चूज करते हैं। लाइन कमांड को चूज करने के बाद हम रेडियस पे कर्सर को रख के राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद सर्कल के हम सरकमफेरेंस पे एक और क्लिक कर देते हैं। कमांड से बाहर निकलने के लिए हम इंटर का प्रयोग करते हैं। इंटर प्रेस करने से आप कमांड से बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद हम लाइन कमांड का यूज करते हैं। लाइन कमांड को यूज करने के लिए हम सर्कल के सेंटर पे पुट करके देखिए ऐसा है कि लाइन कमांड को जब जब आप यूज करेंगे तो फिर आपको ऑर्थो तुरंत ऑन करना होगा। ऑर्थो ऑन करेंगे तो आपकी जो लाइन जो है ना वो 90 डिग्री पे, चाहे 90 मतलब स्ट्रेट रहेगी, चाहे 90 डिग्री पे, चाहे 180 डिग्री पे, और चाहे तो फिर 0 डिग्री पे। ठीक, तो 90 डिग्री पे हम लेके वैल्यू को इंटर कर देते हैं 200 एंड आफ्टर दैट इंटर प्रेस करेंगे। And after that we will choose the sweep command from here, and once we will click on the object, select the object and press enter and select the path and press enter. After that we will choose extrude option from here and we will once right click on the object and press enter and enter the height as 200 and press enter. We will again uh, choose on the solid subtract option and once click on the whole hexagonal object and press enter, and then we will select the circular or cylindrical object and press enter. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नट के बीच में हमारा जो स्पेस है वो खाली हो गया। ठीक, फिर आफ्टर दैट वी विल अगेन चूज extrude option from here and once we will click on the object and press enter, and after that we will enter the height as 200 and press enter. After entering the height, we will choose a fillet command from here. Use fillet command. Once click on the upper circumference and enter the value of fillet radius as 25 and press enter and select the bottom circumference and press enter. For solid subtract or solid intersect, we will choose a solid intersect option and once click on the whole object and the remaining object we will select it and press enter.
we will press enter and में आप देख सकते हैं कि नट का डिजाइन हो चुका है। आफ्टर वी विल चूज, यहाँ से हम नट को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी ग्राफिक्स को रोटेट करते हैं। दिस इज द ऑप्शन ऑफ रोटेशन, और इसे ऑर्बिट भी बोलते हैं हम। तो यहाँ से हम नट को रोटेट करते हैं। ओके, नाउ वी विल सेलेक्ट helix command from draw option, and we will place our cursor in the midpoint, and we will enter the value as 100 and press enter. After that, we will enter the top radius. This is the bottom radius where we have entered, and after that we will enter the value of top radius as 100 and press enter, and we will give a height of nut। और हम उसके पहले पहले टर्न्स को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे हेलिक्स के टर्न। तो हम हेलिक्स के टर्न को यहाँ पे 15 सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम हाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हाइट को हम 191 ही रखते हैं, 190 वैल्यू पुट करके इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप नट का डिजाइन हो चुका है। अब हमें सिर्फ जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स को ही मतलब कट करना है। तो थ्रेड्स को कट करने के लिए हम नॉर्मली कोई सर्कल कमांड में यूज करेंगे। सर्कल कमांड को यूज करने के बाद हम इसका रेडियस इंटर करेंगे 2.5, and after that we will press enter, and we will select the sweep option and select the circle, enter, and select the threads, select the threads and press enter. Here we will see that the threads gain the diameter of the circular area. So after that we will select the solid intersect, and once click on the whole nut and press enter, and after that click on only threads and press enter। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नट का डिजाइन हो चुका है।